Hey guys, welcome to our Tech Power Mind. My name is Mohit Vashne, and in this video, I come with one more hiring update, which is coming from PWC company, which is one of the big four company. So company has again opened their job application for the role of aspiring innovator technical search role, and company has also completed their first phase hiring. This is the second phase hiring. So if you have not applied earlier, then you can apply for this hiring. And company have lots of vacancy. Company definitely will hire in bulk, and especially for PWC company, bulk means कि कंपनी किसी को भी हायर नहीं करने वाली. कंपनी पहले शॉर्टलिस्ट करती है, देन उसके बाद एक कंपनी एग्जाम का मेल भेजती है. ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई करा हुआ है आप सभी के बाद एग्जाम का मेल आने वाला है. पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसी के बाद आपको मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का. क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास एग्जाम का मेल नहीं आया था, ना ही कोई अपडेट आया था. जो शॉर्टलिस्ट हुआ था उसी के पास एग्जाम का मेल आया था. एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी के पास बहुत वैकेंसी है, कंपनी हैव ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी. अब मुझे कैसे पता? So the simple answer is I'm currently working in PWC company. You can check out. This is my official LinkedIn page, and I have joined PWC company 3 months ago. You can check out. I am a senior associate in PWC company. इसलिए मुझे पता है कंपनी के बाद बहुत वैकेंसी है. मेरे पास डेली मेल आते हैं एचआर की तरफ से कि कंपनी हायरिंग हो रही है, आप लोग रेफर कर सकते हो कैंडिडेट को. एंड मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट को रेफर भी करा हुआ है. अगर आप लोग जाओगे मेरी प्रोफाइल पर चेक करोगे, मैंने पहले भी लिंक्डइन पे पोस्ट करा हुआ है कंपनी हायरिंग कर दी है. एंड मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट को रेफर भी करा हुआ है PWC कंपनी में. एंड मे भी इस टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं ही आप लोगों का टेक्निकल इंटरव्यूअर हूँ. आप लोग एग्जाम क्लियर करते हो PWC का, क्योंकि अभी मैंने PWC कंपनी में इंटरव्यू में चालू करा हुआ है. मैंने चार से बात करा हुआ, तो मे भी चांसेस है कि आप लोग एग्जाम क्लियर करते हो इस रोल के लिए, तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ PWC कंपनी में. तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कंपनी के पास बहुत वैकेंसी है, बट कंपनी रैंडमली किसी को हायर नहीं करती. पहले शॉर्टलिस्टिंग होती है, देन उसके बाद कंपनी एग्जाम का मेल भेजती है. सो आई होप यू गॉट सम आइडिया. एंड आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा. जिन लोगों ने पहले अप्लाई करा होगा उन लोगों को डाउट था कि सर हमारे पास एग्जाम का मेल नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, लास्ट टाइम हमने अप्लाई करा हुआ था. तो यही उसका आंसर है. कंपनी पर शॉर्टलिस्टिंग करती है, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आपके पास एग्जाम का मेल नहीं आया, इंटरव्यू का मेल नहीं आया. तो ये कंप्लीट फंडा है PWC की हायरिंग का. सो नाउ लेट डिस्कस इन डिटेल अबाउट द PWC कंपनी हायरिंग. So the last date for the application is 23rd June. So make sure you complete your application before 23rd June. Talking about the salary package. So currently company hiring for two different degree. First one is for non-engineering degree, second is for engineering degree. And for non-engineering degree, company will pay 3,50,000 salary, and for engineering degree, company will pay 4,50,000 salary. So this will be salary package after selection. Talking about the degree, so first role is for engineering domain. So for this role, if you have done BE, BTech and you have 60% marks throughout with no active backlog, then you are eligible for this hiring. And this is a non-technical job. So for this role, you must have understanding about the Word, Excel, PowerPoint. Coding is not compulsory for this position. And if you have basic understanding about cybersecurity, then it's a plus point for you. But this is not compulsory. If you have this, then you will receive priority. Otherwise, no problem. And second role is for non-engineering domain. And for non-engineering domain, if you have done BCom, then only you are eligible for this hiring. You can check out. So if you are interested, eligible, do check out this hiring. I will attach apply link in video description and complete your application. And if you get shortlisted, then you will receive further update on your mail only. And if you need any kind of help, for example, exam, interview preparation, then you can ask me in comment section, or you can message me on LinkedIn, Telegram, or you can connect with me one-to-one over call on TopMate for mock interview. So that's all for this video. I hope this video helped you. And if you found this video helpful, then please do like this video. Thank you and goodbye.